नमस्कार, मेरा बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। जब बजट बनाने की बात होती है तो हम महिलाओं का कोई सानी नहीं होता। घर के लिए ये काम तो हम न जाने कब से करते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस हमें अब जाकर निर्मला सीतारमण के रूप में एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री मिली है। वित्त मंत्री के रूप में उनका 1 साल से भी कम की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण रही है और जब वो अब दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं तो उनके सामने कई मुश्किलें हैं। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? देश के लिए कैसा बजट बनाते? इस कार्यक्रम में हम आपको मौका देते हैं देश के लिए अपना बजट तैयार करने का। आपके इन बजट को जांचने, परखने और मूल्यांकन करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं विशेषज्ञों का एक पैनल, जिसमें शामिल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रह चुके अजय दुआ साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अभिनव प्रकाश, और साथ ही में है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आए छात्र। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन पेश कर रहा है आज का बजट। मेरा बजट में आज बजट बनाने की जिम्मेदारी उठाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल ने। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस किया। इसके बाद आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की पढ़ाई की। आपने फाइनेंस में डॉक्टरेट IIT दिल्ली से किया। डॉक्टर यामिनी को 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उन्हें कॉर्पोरेट फाइनेंस, एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस, इंटरनेशनल फाइनेंस, न्यू फाइनेंशियल मॉडल्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और फाइनेंस जैसे कठिन विषयों पर महारत हासिल है। आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अंडर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। डॉक्टर अग्रवाल को उनके योगदान के लिए बेस्ट प्रोफेसर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2015 और वुमेन इन एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2017 सम्मानों से नवाजा भी गया। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में परमानेंट इनवाइटी हैं। फाइनेंस की दुनिया से जब वक्त मिलता है तो यामिनी संगीत सुनना, चेस खेलना, फिल्में देखना और घूमना पसंद करती हैं। उन्होंने करीब 20 देशों की यात्रा कर रखी है। और अब तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आज के मेहमान का, यामिनी अग्रवाल, जो हमारे लिए पेश करेंगी अपना बजट। यामिनी, इतने सारे बजट्स आपने एनालिसिस किए हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी किए हैं, अब जब बनाने को मिला आपको बजट तो कैसा चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? काफ़ी मुश्किल काम है जी। एनालाइज करना थोड़ा आसान लगता है और जब बनाने बैठते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि हो सकता है हम दे दें, पर क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनकी एलोकेशंस बहुत मुश्किल होती है। चलिए, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फिस्कल स्टिमुलस आप दे रहे हैं और प्रूडेंस किस तरह से रख रहे हैं आप इस बार। जी। Thank you, Sonia. So I rise here to present the budget before the August gathering. I believe the economy is strong and it has a certain set of challenges before it. So we do understand that India is likely to be setting towards becoming the 4th largest economy. And since it is the fastest growing economy in the recent years, it has lifted millions of people out of poverty. It has witnessed stronger economic and social reforms which have integrated the economy into a united, progressive and a very forward-looking economy. We've ranked higher in ease of doing business. We are working towards ease of living, which has been the agenda of the government in the past. With the methods of e-governance, they have been trying to introduce digitalization in all public service deliveries, introducing transparency and accountability in all their actions, bringing about greater compliance by people to the rules and regulations that are there. Government has adopted the role of a facilitator, pushing big ticket reforms like demonetization, GST, digitalization and financial inclusion, which are slowly and gradually ushering last mile advantage of economic prosperity that did not reach and uplifted the poorest of the poor in India since 1991. We've had a great economic set of reforms since 1991, which ushered an entire growth rate which went into double digits,
because of which many people were lifted out of poverty. However, it did not allow many of the poor people to connect themselves with the economic prosperity because financial inclusion and many other aspects did not reach them. India has a GDP of US dollar 2,719 billion and a per capita income of US dollar 2,038 and continues to endeavor to uplift 21.2% of the population that earns below US dollar 1.90. We have our own challenges, and amid of those domestic challenges and the external challenges that we are facing because of the trade tensions and protectionism, we have seen a slowed growth. The growth in India has reached to a level of about has come to a level of about 5%, which is there in the past quarters, but we do endeavor to reach to a higher level. It is projected by the IMF that the growth rate for India would reach its medium-term potential level of 7.3% in the coming year. A comprehensive reform package is needed to guide the economy to a US dollar 5 trillion mark in next 5 years. Reform agenda should include inclusive and sustainable growth. Given the slow growth, monetary easing by the central bank should help correct the cyclical weaknesses. We don't believe that these are permanent issues, but these are issues which have just been created because of the external headwinds which have been there of global slowdown. And we are likely to pick up with the growth pace and reach to a higher level with our strong united effort. India, to maintain its economic balance, should continue with its fiscal discipline of 3.34% to ensure economic equity and social justice. The biggest burden on the common man is of inflation, and when fiscal deficit rises because of excessive expenditures, they have an effect over the poor man or the common man in terms of the inflationary effects. Inflation needs to be maintained at about 4% or to a maximum of 6%. It needs to rejuvenate the growth engines by giving impetus to investment and consumption. However, the government's business is not to be in business, but it continues to give impetus to the economy through investments in the infrastructure as a facilitator to the overall economic and social infrastructure that is there. They have been making a continued investment and a proposed investment in the infrastructure of about 100 crores in the infrastructure. It needs to rejuvenate these growth engines by continued investment in the Sagarmala and Bharatmala projects, which will focus on investment multiplier that enhances the cost competitiveness of the Indian industry. The proposal of a national grid providing for electricity is also likely to help the Indian industry bring about better competitiveness. There has been also efforts by the government in reducing the corporate tax rates, bringing them closer to what the global rates are, trying to create parity for the corporates to operate in the Indian markets, and also allowing FDI investment or inducting the FDI investment in the economy. Social welfare and development should continue to guide the programs that can bring inclusive growth with economic equity. Our social development indicators have improved a lot in the past, but sufficient impetus needs to be given to balance economic growth and social upliftment with continuation of schemes like Ujjwala Yojana, Saubhagya Yojana, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Awas Yojana. Governance of the public sectors and the efficiency of their credit allocation needs strengthening. Substantial capital injections from the government budget over the past 2 years and the initial results of the implementation of the Insolvency and the Bankruptcy Code have enabled the PSUs, which are the public sector banks, to be in better positions to extend credit to the economy. MSMEs need to be continued to be supported from the financial sector. Some sectors like real estate and auto have shown weaknesses, but there has been provisioning made for the real estate sector by providing them with certain set of funds so that their stress can be reduced. I believe given this particular background of the economy, there should be 5 important priorities of the government. 1, to accelerate growth to
a level of 7.3%. Second, to bring about fiscal consolidation to a level of 3.34%. Third, to bring about investment in specific sectors like infrastructure, health, education, rural development, and agriculture. It should also focus on the social security system and social development and rural development. For this purpose, I believe that the agriculture sector should be given a higher allocation. Since it is badly needed that the agriculture sector be provided with more funds, I propose to have an enhanced allocation of 65,000 crores to this sector to improve the technology in the agriculture farming, provisioning for agriculture equipments, provisioning for rainwater harvesting facilities, especially in the drought areas. I also propose for setting up of special plant cells to recognize the 8 geographical zones and developing specific products on which economies of scales can be developed and the agriculture producers can be marketed internationally to save the government from bringing about much expenditures on the MSPs. I also believe that a subsidy should be given on high-yielding variety seeds for the farmers. So from the previous budget, which was there, where the allocation was made to the agriculture sector of about 1,51 crores, 1,51,518 crores, I propose an allocation of 2,16,671 crores. I also believe that the subsidies for the high-yielding varieties should be extended only to the small and the marginal farmers. We also need, a lot of our food gets destroyed and spoiled, because of which we should provide for cold storage facilities and warehousing facilities. Many of the farmers have not been able to access the commodity markets where trading takes place because they are unable to pay for the assaying cost of the warehousing facilities. If these warehousing costs can be reduced or subsidized for the marginal and the small farmers, it will give boost to them. I also propose to give boost to the infrastructure sector and rejuvenate the growth engine of the economy. I propose that a planned investment be increased by 10,04,896 crores to be made to newer projects. A further allocation to be made to railways because they are the lifeline transport system of our economy. 1,03,000 crores be made for upgrading technology, starting new trains, converting narrow gauge to broad gauge, and modernization of railway station. Digitalization to continue and facilitate passengers. Yamini, how about we take a reaction from the guest to whatever you've said till now? And अगर हम growth की बात करें तो 7.3% तक एक्सेलरेट करने के लिए काम करना चाहती हैं यामिनी, जिस तरह से लग रहा है, और फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर वही मेंटेन कर रही हैं 3.34% टू बी ऑन द सेफर साइड. AKB क्या बोलेंगे आप? एम्बिशियस है. जो ग्रोथ के अगर आप दृष्टिकोण से देखें एम्बिशियस है, पर विरोधाभास प्रकट हो रही है जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट 3.34% ही रखेंगे. तो अगर आप ग्रोथ में एम्बिशियस हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर आपको नकेल अपना रखना है तो आप 4 to 6% के बीच में रखना चाहती हैं इन्फ्लेशन. हाँ, और अगर फिस्कल डेफिसिट में मुझे लगता है कि जो एस्टिमेट जो है वो ज़्यादा ही ज़रा एम्बिशियस हो गया, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा रिलैक्स इस वक्त ना किया जाए, ये जो मीडियम टर्म जो ग्रोथ टारगेट जो रखा गया है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं जी. पर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एग्रीकल्चर की जो 2-3 जो बिंदुआं अभी तक आई हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और जिसे कह सकते हैं हम आशा का संचार है उसमें. काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग में जोर है एग्रीकल्चर के अंदर कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से इरिगेशन में जोर देना. तो एग्रीकल्चर का फोकस काफ़ी डिटेल्ड है, अच्छा है, पर मोटी बात है कि फिस्कल डेफिसिट में इतना रोक लगाना शायद फिस्कल जो पॉलिसी जो उसका एक काउंटर सिक्लिकल रोल जो है उसका ज़्यादा हमें उसका विश्वास उस पॉलिसी में नहीं लगता है मुझे. जी.
दुआ साहब, लग रहा है कि फिस्कल प्रूडेंस पर इस समय जोर दे रही हैं यामिनी, पर इस समय जो स्थिति है, अगर हम सरकार को देखें, काफ़ी रिलैक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी नंबर्स एंड ऑल दैट, तो अभी तो कर सकते थे एक्सपेरिमेंट और इस तरह का एक आइडिया रिस्की फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा बढ़ाने का कुछ कर सकते हैं। आप जो कह रही हैं सोनिया जी, वो बिल्कुल उचित डायरेक्शन में, दिशा में ले जाने के बारे में बात कर रही हैं। उससे पहले मैं कमेंट करूं, मैं यामिनी जी के इकोनॉमिक एनालिसिस की प्रशंसा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में क्या देश के सामने क्या अड़चने हैं वो कैप्चर की और उसके उल्लेख, उसका विवरण भी किया। अब उनसे निकलने के क्या तरीके हैं, अभी उन्होंने शुरुआत ही की है, पर उन्होंने ब्रॉड पैरामीटर्स बता दिए हमें। देखिए जी, आपको 5% रेट ऑफ ग्रोथ नहीं चलेगा, हमें उसको 7 से ऊपर लेके जाना है। हमें इन्फ्लेशन के बारे में भी फिक्र करनी है, जो रिजर्व बैंक का पहले था +4% ±2%, अगर उसी के अंदर रहने की आवश्यकता है। उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हमने उसी इन्फ्लेशन बैंड में रहना है तो कि अपना फिजिकल डेफिसिट ना बढ़ाएं, जो पहले हमारे FRBM में भी है और जो अभी तक हमने लिया। मुझे लगता है, अभी हमने उनका प्रेजेंटेशन पूरा हुआ नहीं है कि वो अभी इसको कैसे रखना चाहेंगी 3.34% में, उसका भी उल्लेख करेंगी कि रेवेन्यू और में टैक्स और दूसरे चार्जेस से लेवी कैसे और बढ़ा पाएंगी, जिससे खर्चा भी बढ़ा पाए, जैसे कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, और उसको फाइनेंस करने के लिए उनके क्या इरादे हैं, क्या उनकी मंशाएं हैं, उसके बारे में भी ज़रूर उल्लेख करेंगी। ये मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ। तो स्ट्रैटेजी पर नज़र रहेगी यामिनी अभी आपके। अभिनव, कुछ कहना चाहेंगे आप कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की तरफ राइट डायरेक्शन में जा रही हैं यामिनी इस समय? मैं एग्री करूँगा पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं कि कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल ऑर्थोडॉक्सी इसमें दिख रही है कि आप फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जबकि आज उसकी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए GDP में आपका प्राइवेट कंजम्पशन भी बहुत वीक है, इन्वेस्टमेंट हो भी नहीं रहा है, जैसे इन्होंने खुद बताया कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, बाकी जो प्रॉब्लम से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट्स की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, किस तरीके से बाकी डेवलप कंट्रीज़ भी जो है टैरिफ बढ़ा रही हैं। सो आपका जो है, जो गवर्नमेंट डेफिसिट है, वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस समय इतने कंजर्वेटिज्म से काम लेना मेरे ख्याल से दिक्कत कर सकता है। ग्रोथ रेट को थोड़ा जितना बढ़ना चाहिए उतना हो सकता है ना बढ़े। दूसरी बात है, एग्रीकल्चर पे जो फोकस है वो बहुत सही है, लेकिन सिर्फ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना एग्रीकल्चर पे सिर्फ उसी से बात नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे आपने बोला कि हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स को हम सब्सिडीज़ देंगे, फिर आपने कहा वो सब्सिडीज स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जाएंगी, लेकिन जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होती हैं उसके खेती के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है, बाकी सपोर्टिंग जो मशीनरी होती है, तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जिससे बड़े फार्मर्स ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, न्यू मशीनरीज को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि आप सब्सिडी जिसको देंगे वो हो सकता है इसको यूज़ करने में इसमें सक्षम ही नहीं हो। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर पे थोड़ा और डिटेल में अगर बात होती तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपने दिखाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब ज़्यादा पिक्चर्स में क्लियर होगी। कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे यामिनी आप इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? जी, मैंने फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए रखा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा एक पर्टिकुलर लेवल पहुंच गया है और जिसकी वजह से हमारी क्रेडिट रेटिंग्स इंक्रीज़ की गई हैं। गवर्नमेंट का इंडेवर रहा है कि वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स इंटरनेशनल मार्केट से लें, और अगर फिस्कल डेफिसिट्स इंक्रीज़ किए जाते हैं तो वो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ देखी गई है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी कंटिन्यूसली फोकस किया है कि आप मॉनेटरी ईजिंग से जो है आप इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करें रादर देन फिस्कल स्टिमुलस से। ये भी कोशिश की गई है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिटेन किए जाएं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करें थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स विच आर देयर। जितने भी एफर्ट्स किए जाएं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को ध्यान में रख के किए जाएं, क्योंकि इस समय जो है फिस्कल कंसोलिडेशन मेंटेन करते हुए आपको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी है विदाउट गेटिंग इनटू प्रोटेक्शनिज्म इन एनी मैनर। I also propose an increased allocation of 1,07,000 crores for roads
and waterway connectivity for development of highways, rural Sadak Yojana, and development of ports. I propose an increased allocation of 22,897 to defense for upgrading the defense equipments. I propose an enhanced allocation of rupees 9,485 crores for education. I also propose that adult schools for basic literacy be started in all primary government schools from 6 p.m. to 8 p.m. I also propose that digital literacy programs be created at district level in government schools. To educate women, an interest subvention of 2% may be given for education loans. I propose an enhanced allocation of rupees 9,100 crores to the health sector. I propose health dispensaries be created in every village connected with big hospitals for their doctors and others to be serving at these particular dispensaries on a weekly basis. Health services to be made available to every citizen. I also propose recognition of world-class health centers with specific specializations to be identified, which may be paid a certain amount of a subsidy by the government for the development of these specialization units, which may then attract medical tourists. I also propose that internship with paid-up stipend be given to doctors who are studying in many of the medical colleges for serving in the backward and the rural areas. I propose enhanced allocation of 49,588 crores to social welfare. I propose creation of home shelters for migrant population at subsidized rates. I also propose women hostels for women in phased manner to begin with Tier 2 cities. Self-defense trainings to be initiated in government schools for girls aged 8 to 18 years. Gender sensitization studies to be taken up so that they can be introduced at the school level, because it is not only necessary to educate your women, but also to change the behavior of the men towards the women. Also of some women who may not be in line with the modern setup. Role models which are women and their lives be celebrated to motivate women and men to respect and give opportunity to women. A certain specific days on the names of independence fighters who have been women, as well as who have taken up positions in the corporate world or in different other fields, may be recognized and may be celebrated. I propose the following allocations which have been there, which basically refer to the allocations from the previous levels to this level, whereby pensions be increased from 1,74,300 crores to 1,83,015 crores. Defense, which was allocated 3,05,296 crores, be allocated 3,28,193 crores. Subsidies be maintained at the same levels with an enhanced allocations from subsidy to fertilizer from 79,996 to 87,996. Food 1,84,220 in 2019-2020 to 1,97,115. To petroleum from 37,478 crores to 49,471 crores. Agriculture I've already identified. Commerce and industry be allocated from 27,043 crores, the same level which is there. Development of Northeast, there is an increased allocation from there is the same level from the particular level of 3,000 crores to 3,300 crores. एजुकेशन एक हम अगर यहाँ पर रिएक्शन ले ले अपनी ऑडियंस की भी, हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर गर्ल्स हैं हमारे साथ, कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? In the economy, we have seen that government has taken certain supply side measures like corporate tax cuts to boost the investments, but we are well aware with the fact that investor sentiments will not improve until the demand side is revived. So ma'am, what do you have to say in this regard? How can the demand side, like the demand side is a concern, and how can that be revived? I believe that the demand side can be increased by giving a certain set of tax cuts which are there, also by giving better services to the individuals. So these two things can help in reviving the investment. Also, when the industry will receive the credit from the banks and financial institutions, which are likely to reduce the interest rates, given the 134 basis point reduction which the RBI has done, it is likely to bring about a boost in the investments by the private sector.
दुआ साहब, एक महिला की छाप लग रही है बजट में। बिल्कुल, उसमें तो कोई, जिसे कहते हैं ना, शंका ही नहीं। वो तो बहुत ज़रूरत भी, इकॉनमी में आवश्यकता भी थी। अब मैं बहुत उत्सुकता से बैठा हूँ कि ये सब चीज़ें जो यामिनी जी ने बताई हैं, उसके लिए जादूगिरी, पैसे की जादूगिरी हो कैसे करना चाहती हैं। वैसे जो घर में जो गृहिणी होती है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि कहीं से भी पैसे निकाल सकती कहाँ से, है। जैसे जसवंत सिंह जी कहते थे कि जेट वो जो पिटारे में जो है, पिटारे में से वो कुछ निकाल के महिलाओं लाएंगे। की गुल्लक जरूर रहती है, वो छिपी रहती है सबसे, जो बिल्कुल, पता नहीं मैं होता घर इसीलिए में। अब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। So for education, the allocations have been made from 94,850 crores to 1,04,339 crores. Energy, the allocation has been made from 44,638 crores to 44,638 crores, which is the same, and so forth. The health sector has been made an increased allocation from 64,999 crores to 74,099 crores. Then we have rural development, which has an increase from 1,40,000, which was budgeted at 1,40,762 crores to 1,47,800 crores. Scientific departments from 27,431 crores to 29,625 crores. So these are a particular set of expenditures which we propose in the following manner. तो खुद प्रोफेसर होने की वजह से क्या एजुकेशन पर इतना जोर है इस बार, यामिनी? Well, education is the key to all social development. It brings about change in behavior and attitudes, which can lead the country to the levels which you desire. So I believe we need to have a more educated set of people. And right from the beginning, if it was possible to give allocations to have free primary education, I would have proposed that. जी, अभिनव, आप क्या कहेंगे एजुकेशन के बजट को ही लेकर, क्योंकि जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का भी जिक्र है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को, जहाँ पर स्कूल में कुछ काम नहीं होता है, तो उसको भी यूज़ किया जाए और रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल हों। देखिए, बात सही है कि एजुकेशन पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए, लेकिन भारत में जो एचआरडी मंत्रालय होता है वो कभी भी किसी भी सीरियसली इसको लिया नहीं गया है किसी भी सरकार के द्वारा। ये एक समस्या इसमें रही है। लेकिन जहाँ तक आपके एक्सपेंडिचर की बात है, स्पेसिफिक पॉलिसीज़ क्या हैं इसमें, इसका डिटेल देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। पिछली जो वाजपेयी जी की सरकार थी तब सर्व शिक्षा अभियान एक शुरू हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा मेजर प्रोग्राम भारत की शिक्षा में हुआ नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने की है। प्राइमरी एजुकेशन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे ना टीचर्स हैं स्कूल में, बिल्डिंग्स अगर खड़ी हैं तो उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, पैरा टीचर्स रखे जाते हैं जिनसे काम चल नहीं पा रहा है। तो जब आपकी नींव कमज़ोर होती है तो आपका मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन तो कमज़ोर होगा ही। वो हम लोग कॉलेजेस में देखते हैं, भले आप ग्रेड इन्फ्लेशन करके लोगों को 99% दे दें, लेकिन परफॉर्मेंस पे दिखता है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे पढ़ाया नहीं गया है। बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक लॉजिक नहीं है। तो उस सब पे फोकस करने की तो मेरे ख्याल से प्रमुखता से आवश्यकता होनी चाहिए। तो यामिनी, क्या प्लान है, मतलब किस तरह से एजुकेशन सेक्टर में जो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स निकले वो इम्पोर्टेंस रहे? फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से चेंज करके टीचर्स के ऊपर हो और स्किल डेवलपमेंट पे हो। अनफॉर्चुनेटली हायर एजुकेशन में हमने देखा है फोकस बहुत ज़्यादा है कि आपकी कितनी बिल्डिंग्स हैं, आपने कितने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इक्विपमेंट्स लगाए हैं, रादर देन who is teaching, what they are teaching and how they are teaching, and the graduates who are coming out, where they would be employed. So if we are able to create a set where teachers are given their due respect and they are valued for what they deliver, I think we will be able to bridge the gap of the non-skilled employable people which are there. जी, मैं एक टिप्पणी करूँगा, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर को वो डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर में जो डिफेंस का एलोकेशन जो है वो मुझे लगा कि उसमें थोड़ी बहुत मतलब स्कोप फॉर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अगर हम 3 लाख करोड़ करीबन से अगर 3,28,000 करोड़ ले जाते हैं, इसका मतलब 8 से 9% वृद्धि होती है। मैं समझता हूँ कि
in view of the current geopolitical tensions around us, or in view of the fact that we have not spent enough on defense and defense preparedness, and we have a long, huge, ambitious acquisition program in the offing, मुझे लग रहा है कि डिफेंस में थोड़ी बहुत गुंजाइश और थी। गुंजाइश और हो सकती है। जी यामिना, क्या बिल्कुल, मैं कहेंगे? मानती हूँ कि डिफेंस को ड्यू मिलना चाहिए और उनके पास एलोकेशन होनी चाहिए। अगर हम फिजिकल डेफिसिट स्पेस को थोड़ा सा चेंज करें तो शायद हम डिफेंस की तरफ जा सकते हैं। मैं एक इसी संदर्भ में आपकी दृष्टि से ले जाना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ का 100 लाख करोड़ का हमने अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई है। 600 650 प्रोजेक्ट्स होंगे और हम कह रहे हैं कि ये हमें 5 सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और साथ साथ अगर हमने अपने बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना है, और वही आप भी उसी की तरफ संकेत कर रही हैं जब कह रही हैं कि 5 से 7.3% रेट ऑफ ग्रोथ ले जानी है, तो आवश्यकता है कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है उसे फ्रंट लोड करें। मतलब ज़्यादा अभी खर्चा करके हम ये नहीं कि हर साल 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में है वैसे करें। अगर वैसे करें तो फिर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ, खुद आपने ही कहा, आप ज़्यादा एम्फेसिस दे रही हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्चा किया तो रफ्तार अपनी जीडीपी की बढ़ जाएगी। तो उस करने के लिए तो हमें उसके साथ साथ फिर उतना प्रोविजनिंग भी फ्रंट लोडिंग करके करना पड़ेगा। मतलब हम 20% हर साल नहीं सोच सकते। तो जो अभी आपने फिगर बताए वो तो कोई उतने ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। जी, मेरा मानना है कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल allocations which need to be made to infrastructure, primarily because it takes time to evaluate the infrastructure details that are there. We have limited resources over there. Also, once we make the allocations, we have also a certain set of limited other resources which can build that infrastructure. Also, the investments that we make in an infrastructure do not suddenly reap benefits. So by creating infrastructure where there is more needed, first allocations be made there and then subsequent allocations. Absolutely. Madam, if I might just say, I am absolutely with you that it takes time to get results. First there is an investment, there is a gestation period, and only then you get. That means you have to identify, and I'm sure you would have done it in your exercise, we are probably preempting those questions, that where is this incremental 2.3% rate of growth going to come from? It is not, if there is less investment, less delta in infrastructure, there is a gestation period, then you have to explain, I think, where is the 2.3% extra rate of growth anticipated from? I believe the domestic economy is strong and the domestic consumption can push the economic growth rate to 2.3%, provided we provide those goods and services at lower prices which are needed. And the cost competitiveness which the Indian industry can receive with a built-in infrastructure, whether it is for electricity, whether it is for roadways. That won't be overnight. I understand, but it is going to be a slow and a gradual process. We are talking of the year for which you are presenting the budget, that we want to make it 1.5 times the current rate of growth. Say this year maybe 4.8 to 5%, and there it is 7.3. So almost 50% increase over now. So maybe sectorally, I'm sure you would have done that exercise. From where is this delta of 50% rate of growth going to come from? So I'm sure you would have done the exercise. As we go along, we would probably. इस बीच ऑडियंस के पास भी कुछ सवाल हैं, उनके पास चलते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप लोग, कॉमर्स पढ़ते हैं, बताइए क्या सवाल है। मैम, एज यू से कि इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड इसके लिए एक्सपेंडिचर भी बहुत किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है? I think it's more important when your GDP tends to rise, the revenues automatically are created. So if you have higher incomes, you pay higher taxes, right? So that revenue automatically gets generated. If you are able to generate a higher GDP growth for yourself, the revenues, and if people are compliant to pay, then you will automatically generate
tax revenues. If you look at the GST compliances that are there, which we'll talk about, the GST compliances have also created good amount of revenues for the government. Though there are deficits which are there, which are being taken care, but increasing the tax rate may not be the right strategy at the moment, primarily because the consumption is low and you need to give lower taxes both to the corporates and to the individuals so that the consumption can be increased. Only way is that as the consumption increases and the GDP goes to many folds, the tax revenue automatically seeps in. अभिनव, आप कुछ हेल्थ पर जिस तरह से एलोकेशन की है, क्या संतुष्ट हैं? क्या आयुष्मान भारत को और सजग बनाने की अब ज़रूरत है? जी, कि आयुष्मान भारत एक काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी रही है और मेरा मानना है कि इसको और एक्सपैंड करने की आवश्यकता है, कवरेज इसका एक्सपैंड करना चाहिए। लेकिन जो इसमें भी फोकस होना चाहिए वो है आपकी जो फाउंडेशंस हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं। देखिए, अगर आप कभी भी एम्स जाएं या किसी भी अस्पताल जाते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोग जो इलाज कराने आते हैं उनकी जो बीमारियां होती हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, वो बहुत छोटी सी होती हैं शुरुआत में, लेकिन क्योंकि समय पे इलाज नहीं मिलता है या गलत इलाज मिलता है या डॉक्टर ट्रेंड्स नहीं है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम डॉक्टर जो ग्रास रूट लेवल पे हैं वो अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं, जिसको झोला छाप हम बोलते हैं। आधा डिग्री किया है, आधा नहीं किया है और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी जो हेल्थ केयर पे, जैसे प्राइमरी एजुकेशन पे वैसे प्राइमरी हेल्थ केयर पे रियली फोकस की आवश्यकता है, जिसमें हमको एलोकेशंस बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने एक पेंशन की बात बोली थी, क्या उसमें एलोकेशन बढ़ा रही हैं, तो वो किस कारण बढ़ रहा है? क्या वो 7th पे कमीशन के कारण कुछ एडजस्टमेंट हुआ है इसलिए आप पेंशन बढ़ा रही है? क्योंकि सरकार तो पेंशन दे नहीं रही है 2005 के बाद, शायद से किसी को कोई भी सरकारी नौकरी में सारी पेंशन तो खत्म कर दी गई है। तो पेंशन जो आपको बढ़ रहा है वो किस कारण? For the particular adjustments to the inflations which might be needed. जी जी, यामिनी। Yeah. So as I said, so to maximize now when we talk about tax revenues, as I said, tax revenues will increase if your GDP increases. The last year's estimates have been made at 12% growth. We continue to maintain that particular growth rate for that, and estimated a GDP of 2,35,000, 2 crores 35 lakhs 28,332 crores. And thereby we estimate that we are likely to generate tax revenues of 19,13,514 crores, non-tax revenues of 4,07,133 crores. It is believed that as and when you reduce the taxes, more people become compliant to paying taxes. And if you actually reduce taxes to a lower level, there are likely to be more people who would join the bandwagon. We also believe that there would be recovery of loans of about 16,756 crores, other receipts by 1,38,600. Borrowings and other liabilities, we've not increased much. The 2019 level, we've now moved to 7,81,174. I also propose that the borrowings may be made domestically rather than from the international markets, primarily because rupee can face a weakening and it can risk difficulties in making payments in the near future. So to maximize tax revenues, we aim at better compliance through tax reforms in the tax structure. To boost consumption, there has been a continuous demand for increasing the exemption limit. I propose to increase it by 1 lakh rupees. So it was 2,50,000. I propose it to be 3,50,000. I further propose that no import duties for capital goods imported by MSMEs with less than 250 crores turnover for the goods which are used by them for at least 5 years may be charged, so that they can be technologically upgraded with whatever they require and they can be competitive and can participate in the industrial development. I expect a buoyancy to be maintained in the GST collections, as the average collections for the GST has been about 85 lakh to 90 lakh crores between July to November, and have gone up in the month of December 2019 to 1.1 lakh crores. I expect that there would be substantial increase from the receipts of dividends of the PSUs and the railways by about 62,141 crores. I also expect tax penalties by primarily because of digitalization and other factors to go up by 26,570 crores. Thank you so much. I submit my budget proposals to the August Cabinet. जी
I have a couple of questions, which one is the budgetary assumptions. What I can make out quickly is that the growth assumptions are a nominal growth of around 14.5 or 15% nominal growth, and because if it is 205 lakh crore base of 2019-20, and if you are saying that it will go up to 235 lakh crore, then it assumes that you are budgeting for a nominal growth rate of 14.6%. Now, my worry is that are we being really too ambitious from a current year's nominal growth rate of 7.5%? We are planning to double it, and within that, what you have suggested is that the real growth will be 7 and 7.5%. So if 15% is right, then are you assuming 8% of inflation? So I have some serious questions on the numbers that we have presented for this budget. That's number one. And number two, we need to have a greater clarity on how do you arrive at the 3.34% of fiscal deficit at GDP, or are you leaving that bit unsaid as the previous finance minister did in a budget speech? Okay, so when we actually estimated about 12%, that was what previously the government had estimated. The informal sector contributes to the economy, which is not, which does not get accounted a lot of times in the growth rate. No, but 12% was the budgeted. What actually happened is 7.5%. What actually happened is a 7.5%, but what was estimated was 12%. So we took the same percentage which was there. One, and second, what we do understand is that the informal economy is getting into the organized sector, whether it is by the process of digitalization, whether it is by the process of GST, or by the government giving interest subventions to many other people. They are becoming a part of the overall economy. We also believe that the investments will not only take place from the corporates who have been given a lower tax rate of about 15% to 22%, which is there. We also believe the MSMEs that have been given capital or credit will also take an advantage of it and would further enhance the investments in the economy. We also believe that when we talk about the overall growth parameters, since we have a strong domestic consumption power, we will be able to reboost it through the different investments that are being brought about. That is what I believe. And as far as my revenue deficits are concerned, it is about 5,67,734 on the projected level. Effective revenue, which is about 2.41%. The effective revenue deficit is about 3,53,234 crores, which is about 1.5%. The fiscal deficit is at 7,84,804 crores, which is at 3.34%, which is there. And primary deficit is maintained at 51,693 crores, which is at about 22%. Okay. Mathematically, madam, your budget is perfect, balanced. There is no doubt about it. But I think what we could perhaps discuss are the assumptions on which it is based, a point which Mr. Bhattacharya also raised. Probably the shortage of time, you could not spell out why you are so optimistic about the revenue of the government. The revenue of the government, as we have seen in recent years, is certainly from taxes, but it is also a fairly increasing sum year by year from the non-tax resources, sources. Yes. One is the disinvestment target. Yes. Maybe if during the current year we set the ball rolling of strategic disinvestment where the control is passed on to the private sector, maybe much more money will come. Next year, by government reducing its control or giving up its control on many well-to-do companies. This could, PSUs, that could perhaps be one way out. Similarly, we always have the Reserve Bank transfers. Yes. How much we could get from the Reserve Bank. We
not only interim but even at the end, because that is an additional source. I agree. And sometimes the Reserve Bank is also accommodative. It also gives you advance of the next year. Yes, it So does. maybe this third, and I'm only surmising, is that did you also take into account, which all the previous finance ministers have done, whichever government they have come from, that a lot of government's deficit is actually passed on to the public sector undertakings, that they borrow rather than the government. We have the clear-cut examples of Food Corporation of India, the IRFC, the Railway Finance Corporation. We have the example of the the companies which actually Power Finance Corporation borrows, etc. That maybe these are also the sources on a larger scale which you are anticipating in your keenness to make that the budget is large, yet it does not come. And finally, I think the budget could have mentioned, while spelling out these, that you also expect a much larger investment to come from the private sector. Yes. That once the confidence in the country increases, there will be a greater flow of FDI into the country, into the investment sectors, as long as the policy and the regulatory framework is made more conducive and opened up. And second, that as the demand for things like power, etc., increases, the investment which today has stopped going into power generation as well as power transmission will again revive, because you can't live at just 3% rate of growth in power demand when the need is, and that our average used to be 7 or 8%. So I'm sure that these are perhaps some of the factors at the back of your mind. जी, I agree. और साथ ही यामिनी, हाथ में पैसा लोगों के आए ताकि डिमांड बढ़े, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है. आपके बजट में ये कहाँ पर है? We've given 1 lakh exemption which is there to people so that it shifts from 2,50,000 to 3 मैं lakh. काफ़ी हैरान थी कि अभी तक रिस्पांस नहीं आया कि 1 लाख एग्जेम्पन जो दी गई है. मेरे ख्याल से बहुत आज से धीरे से बोला होगा. उसका भी थोड़ा सा हाँ, ये 1 लाख का एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन आप दे रहे Extra हैं. exemption. 2.5 lakh से 3,50,000. 3.5 lakh. Yes. And for pensioners above 60, senior citizens, For everyone. for everybody. everyone. Okay, okay, that's a very good thing. That's a very good जी अभिनव. हाँ, देखिए, अधिकतर बातें जो प्रश्न थे वो उठाए जा चुके हैं कि आपका जो एजम्पशन है कि आपने ग्रोथ रेट को जो ज्यूम करके जो बनाया है, उस पर अभी भी थोड़ा सा शंका है कि उतने ज़्यादा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके जो ग्रोथ के हैं. दूसरी बात है कि इसमें जो मेन मुद्दा था कि ग्रोथ को रिवाइव कैसे किया जाए, उसको लेके कोई ऐसी कोई फ्लैगशिप स्कीम या कोई ऐसी कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी अभी तक निकल के इसमें से बजट में से नहीं आई है. आपने फोकस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए और वाटरवेज पे किया है, वो एक बहुत आवश्यक चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई कोहेरेंट या कोई ऐसा कोई डिसाइसिव एक्शन जिससे ग्रोथ शॉर्ट टर्म में कम से कम रिवाइव हो, इस बजट में कैसे निकल के आ रही है, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वो बेहतर जी, रहेगा. मैं बिलीव करती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंसेस, जहाँ पे मॉनेटरी अकोमोडेटिव स्टैंस लिया गया है, वो इटसेल्फ पुश करना चाहिए ग्रोथ के लिए, और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस रिड्यूस किए गए हैं वो भी अपने आप में फ़ायदा देने चाहिए. तो बेसिकली आपका कहना है कि फिजिकल पॉलिसी के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी है पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करे, और जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर हैं जैसे एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, सोशल सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करे. एक जगह एक इशू मुझे लगा कि आपके बजट में कैपिटल मार्केट के ऊपर आप कंप्लीटली साइलेंट हैं. कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का बहुत एक लंबा इशू, वो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहमियत रखता है. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक बहुत बड़ा इशू बन गया है. अगर जो डिजिटल इंडिया के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए उनकी जो कैरी फॉरवर्ड, उनकी जो लॉसेस हैं कितने साल तक ले सके. सो ऐसे सारे छोटे छोटे इंसेंटिव्स जो अगर आप इफ़ यू टोट देम अप, दे विल मेक अ बिग इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है ऑन द कैपिटल मार्केट
कि वहाँ पे आप कैसे उसको देखते हैं, क्या करना चाहिए आपके बजट में? IMF का एस्टिमेट है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2% ऑफ द GDP होगा, और जो हमारे प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 400 बिलियन से ज़्यादा हैं। आपका जो अभी ओवरऑल ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसमें इंडिया एक काफ़ी वाइब्रेंट इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरह प्रेजेंट है। इन्वेस्टर्स के पास अगर चॉइस दी जाए चाइना या इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की, दे वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इंडिया. Given the trade war between US and China, the investments are from China are drifting towards India. Even Chinese companies trying to target US companies or other companies are coming and planning to manufacture in India. So I believe that there is no incentive that needs to be given to the foreign investors, even by removing the LTCM, because I think they should pay for the growth and development of the country, because they have the capacity to pay and they should contribute for the benefits that they take from the economy. जी, वैलिड पॉइंट काफ़ी दिया है यहाँ पर। हमारे दर्शकों के पास कुछ सवाल है। As you've proposed a very higher amount of allocation to the education sector, but ma'am, when it comes to the job sector, so we are facing a lot of a very high level of unemployment already in India. So ma'am, what's your take, like how much and what amount of the allocation should be done in the job markets as well to decrease the unemployment rate present? I believe that a lot of people don't receive information about the jobs which are required, and there is an information asymmetry which remains persistent in the economy. So there are people who are employable and there are people who want to employ, but the information doesn't reach to them. And I would have proposed setting up of something called the National Labour Exchange, where digitalized records of the labour may be maintained. But I have not kept it as a proposal in the budget. That can be viewed as a proposal. We've kept it, we have given this proposal as an institution to Niti Aayog and others, but that can be surveyed through. Yeah. I have one question for Yamini ji. It's clear that that you have shown greater faith in transferring money to largely urban India, but not to rural India. And I will explain to you why I am saying this. You have chosen to give incentives for the taxpayers, around 7 crore Indian taxpayers who are at the top end, and they are getting better, the exemption limit जो आपने उसका जो 80cc का बेनिफिट आपने बढ़ा दिया उसका, पर आपने रूरल इंडिया में कोई ट्रांसफ़र या कैश ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में नहीं किया। हालांकि एक तबके का कहना ये है कि अगर आप रूरल इंडिया में ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र करें तो डिमांड बहुत जल्दी बढ़ सकती है, वैरेस अगर आप जो अर्बन इंडिया है, जो टॉप ऑफ द जो एलिट इंडिया जो है, उसको अगर आप एक रिलीफ दें, वो इस माहौल में वो पैसा शायद बैंक में रख देंगे, वो और कोई डिमांड रिवाइव करने के लिए काम में नहीं आएगा। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? सब्सिडीज आपने दी है लेकिन पीएम किसान का जिक्र नहीं किया आपने। जी, मैंने एग्रीकल्चर में एलोकेशंस किए हैं जो हायर हैं। एक और उसमें पीएम किसान है? जी, उसमें वो है, पर मैं पर्सनली विश्वास करती हूँ कि कैश सब्सिडीज़ नहीं देनी चाहिए। पीपल शुड बी गिवन अ लाइफ ऑफ डिग्निटी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम, राइट फ्रॉम हेल्थ टू एजुकेशन टू अदर्स फैसिलिटीज़ लाइक रूरल रोड और अदर्स। मैंने रूरल सड़क योजना की भी बात की है, और मैंने कहा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी डिजिटलाइजेशन के थ्रू भी करें बाय डिजिटल लर्निंग। आप उनको पार्टिसिपेट करें, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो स्मॉल लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको आप इकोनॉमी के साथ जोड़ें ताकि वो अपने आप इतना कमा सकें कि उन्हें किसी से भी पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े। So capacity building is your focus. Capacity building is my focus. जी, सवाल। In this budget, will there be any provision for the electric vehicles or e-vehicles? And if yes, how much? I have not proposed anything for the environmental side, because I think the different steps have been taken by giving subsidies to the solar panel sets that are there. Also, I believe that what has happened is that the single plastic use, which has been removed by the government or has been banned, has motivated people to use paper. Instead of that, they should be given a subsidy for using mitti bartans. So if even government canteens or government service providers can use mitti bartans as a provision, that can be provided, but I have not proposed it in my budget.
जी, एक आखिरी कमेंट में आप तीनों से लेना चाहूँगी, एक क्विक कमेंट। अभिनव, आपसे शुरू करते हैं। इट्स अ डिसेंट बजट, लेकिन जैसे कि पहले बात हुई कि ग्रोथ का एजम्पशन थोड़ा हमको देखना पड़ेगा अगले साल जब हम मिलेंगे तो इस पर कुछ चर्चा नंबर दोबारा देना होगी। चाहेंगे आप 10 में से? नंबर भी देना होगा, आई थिंक 7 out of 10। 7, wow, that's a good number। जी सर। बजट महत्व का है, जी। पर हमारे देश में दिशा दिखाना, जी। पॉलिसी दिखाना कि कैसे ये आगे देश बढ़ेगा, और वो मैडम ने बहुत हर विस्तारित रूप से जी, कितने उसके नंबर आप बारे देने जाएंगे? मैं इनके साथ सहमत हूँ, वो जरूर 7 के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ दैट एक्सप्रेशन, दिस इज़ अ गुड गैम्बलर्स बजट। ओके। She's a good gambler. She is gambling on growth, and a very ambitious growth. And if that gamble pays off, I think the economy and she herself will reap huge dividends. If that 15% nominal growth, that dream, it comes true, if the economy picks up so fast, so quickly, she will prove all the Cassandras wrong. And she will be the star of the show. So there is no doubt about it. And I think, as Mr. Dua rightly pointed out, this is the time where probably we should have greater faith in India's youth, and she represents that. And let's hope her dream comes true. How about marks? Marks, when I come to the marks, I बहुत realize strict professor थे। I realize that when I come to marks, I think of the budget as an onion. So when I first saw the onion, I was not going to give her very good marks. Okay. But I began unpeeling the onion, and I realized that there is a lot of thought, a lot of content that has gone behind it. So from my initial miserly behavior of giving 4 and 5 to some others, I will give her 6. Wow, that's good। तो सबसे फर्स्ट क्लास मिला मैडम को। जी, यामिनी, बहुत बढ़िया आपने बजट पेश किया है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और ऑडियंस ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे, उनके लिए भी हम तालियां बजाना चाहेंगे। बहुत अच्छा काम आपने किया। यामिनी, आपका बजट बेहतरीन रहा। उम्मीद करते हैं कि घरेलू बाजार में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था हो जाए, कि डिमांड बढ़े। तो आप लोग यहाँ पर स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यामिनी, और सारे गेस्ट का, और साथ ही ऑडियंस का भी। दर्शकों को हम बता दें कि बजट किस तरह का होता है, उसे सरल बनाने के लिए, उसे अच्छे से समझाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए हम यूं ही नए नए प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।